Hey everyone, good morning to all. Welcome to all dear students and friends and ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ constitutions ପଢୁଥିଲ constitutions ର fundamental rights। fundamental rights कहले काना? fundamental rights कहले that are the basic rights or basic for unit of our life। ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଞ୍ଚବାର ଲାଗି fundamental right is basic for us। what are those? हमको जीवन बचवार लगी काना काना दरकार? शांति रे खाइबारटा दरकार, देन सुइबारटा दरकार, right to food, right to sleep, in fact right to move in any part of the country, all these things are na। so fundamental rights कहले those rights which are basic for our life and that are very important for our material development, for our spiritual development, for our cultural development। अब आमे देखिथिला कि हमर देश रो फंडामेंटल राइट रो पछ किछि उत्तर इतिहास लिटिल बिट देखिथिला कि काना फंडामेंटल राइट इट इज इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। समस्त जानिछो पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 इतार इतिहास हमें देखिथिला कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड रे इन द ईयर 1205 किए किंग जॉन guaranteed certain conditional right। King John guaranteed certain conditional rights, and what is that? King John signed in the Magna Carta। King John signed in the Magna Carta। तो 1205 बाद 13th सेंचुरी रे अन पाखा पाखी केते एटा 2021 चलचे मन 13 800 वर्ष पूर्वे फर्स्ट टाइम किंग जॉन किछि गुडा कंडीशन राइट्स कहा के देइतिले द पीपल्स ऑफ यूके आउ ही साइन इन द मैग्ना कार्टा फर्स्ट टाइम। तापरे यूएसए रा बिल ऑफ राइट्स फाइन आमे जेन ठानो की इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशंस फॉलो करिचा बा यूएसएस बिल ऑफ राइट्स was taken as a model to formulate the fundamental rights of our country। like that in India in fact no doubt fundamental rights was implemented from when जेन दिन ठानु कॉन्स्टिट्यूशंस लागू होला 26 जनवरी 1950 हां कि नहीं। किंतु इतार इतिहास जदि देखबो इंडिया रे कराची सेशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 रहला एंड से दिन ठानु फ्रॉम ड्यूरिंग कराची सेशंस इन 1931 one of the resolutions, that is fundamental right resolutions, was passed। fundamental right resolutions was passed। clear? तो इतिहास बुझिगला એટલે ટીકે સમૂહ કર દવા part 3 is also called as the Magna Carta of the Indian Constitutions। clear? our fundamental rights are followed from the principles USA, that is Bill of Rights। okay, India रा first time discuss इतला केन सेशन रे INA Indian National Congress 1931 Karachi sessions। fine, clear? the next टिके बैठे दमा जे लिखना पहले डी पॉज करके लिखेंगे, राइट? फाइन, नेक्स्ट। सो त इतिहास बुझिगलो एबे बुझमा कि फंडामेंटल राइट्स रो इंपोर्टेंस पूर्वरु आउट इनिस बुझमा त फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। व्हाट आर दैट? फंडामेंटल राइट्स रो फीचर्स बा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट। आमे लास्ट क्लास बहुत भल से पढितिला गुटे कैरेक्टरिस्टिक्स काना जस्टिसिएबल। ओके, जस्टिसिएबल्स कहले काना कि आवर फंडामेंटल राइट्स केही नेई नाही पारन। ओके, जदि किए नेबे प्रोविजंस इज देयर कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अछन आमर से फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्ट करवार लगी। वी कैन अप्रोच टू द which one? Supreme Court and High Court through the article 32 and 226 सेटा पढी दिला।
Next one, it is not absolute. It is not absolute. ता माने कान नो डाउट मौलिक अधिकार बट सदा बेले सिचुएशन समान नहीं था द टाइम इमरजेंसी बा डाइवर्सिटी इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट डाइवर्स कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड तो से डाइवर्सिटी के एकोमोडेट करवार लगी समाज रे समस्त को समान आकार देखवार लगी भी किछि गुडाए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जुक्ति युक्त काना जुक्ति युक्त रेस्ट्रिक्शंस कैन बी imposed तामन फॉर एग्जांपल हमें कहमा कि राइट टू इक्वालिटी समस्त समान किंतु ना वृद्ध और यंग भितर समान ही पारबे मेल फीमेल भितर समान ही पारबे ट्रांसजेंडर भितर समान ही पारबे कि ना लाइक दिस गोटे कोरोना टाइम रे नॉर्मल सिचुएशन समान होबा का वार और ई टाइम रे समान होबा का नहीं तो डिफरेंट सिचुएशंस रे डिफरेंट जिनिस तो restrictions can be imposed. Okay, right? Free to speech आमे अच्छा जहाँ भी कही पारमा but अनर्गल एंता किसी कहवा जहाँ टाइम के समाज के अशांति करवा तो से ऊपरे भी restrictions ही पारवा तो it means that fundamental rights is not absolute. Certain reasonable restrictions can be imposed. Okay, आमे each fundamental rights से काना restrictions भी मैं discuss करमे. Next one, it can be amendable. इटा हमें चेंज करी पारमा मने पको राइट टू प्रॉपर्टी जेंटा आर्टिकल 31 रे थिला सेटा के हमें चेंज करी कि केते 300A रे 44th अमेंडमेंट 1978 रे हमें नै जाइथिला राइट टू प्रॉपर्टी टा एवे लीगल राइट अछि जानि छ नेक्स्ट वन जस्टिस विल नॉट हैव नेक्स्ट इट जितनी भी कंट्री रे फंडामेंटल राइट्स अच्छे इंडियन फंडामेंटल राइट इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन इट इज वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव माने पूरा माने वाइडर फॉर्म रे अच्छे वाइडर फॉर्म इन एनी अदर कंट्री जितने भी देश रे अच्छे सबु थारो वाइडर फॉर्म रे इंडियन फंडामेंटल राइट्स इज देयर नेक्स्ट इंडियन फंडामेंटल राइट्स इट डू not back any law. For example, Indian constitutions बा भारत रो संविधान रे बहुत सारा अधिकार अच्छे किंतु सबु अधिकार और फंडामेंटल राइट भितर डिफरेंस अच्छे और अन्य अधिकार रे काना गोटे सेपरेट लॉ बनावे के पड़ो फाइन लाइक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट women can get 6 months of what leave in the case of maternity period 6 मास तक से माने छुट्टी नहीं पारबे केन के टाइम रे मातृत्व समय रे किंतु तार लागि अलगा एक्ट अछि किंतु फंडामेंटल राइट वी आर एन्जॉयिंग फ्री टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री तार लागि किछि सेपरेट लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड डू नॉट नीड नो नीड ऑफ एनी लॉ क्लियर तावन पार्ट 3 रे अछि माने दैट्स एनफ apart from all these fundamental right is very important in the sense that justice gulam bujlam not have okay in fact next it is negative in nature कहले काना fundamental right protect करा हिचे against state बा स्टेट कहले काना आर्टिकल 12 रे बहुत भल से आज ही मैं कहि देमी फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट स्टेट ता माने गवर्नमेंट एंता किछि करि नै पारे जेंटा कि इताकर फंडामेंटल राइट्स के लोकंकर फंडामेंटल राइट्स कहा के दिया हिची फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल्स क्लियर ना तो इंडिविजुअल्स रो फंडामेंटल राइट्स के हैम्पर करबा लागि गवर्नमेंट किछि करि पारिबो नाही कोनोसी भी वे रे क्लियर ना तो इट इज नेगेटिव टू द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी थिंग्स व्हिच विल वायोलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल क्लियर ना इन अदर वर्ड्स ऑटोक्रेसी धरिनियो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बा डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट ओके
गोटे गवर्नमेंट जदि बहुत दिन रही गला नॉर्मली कहां से अहंकार आसी जाए डिक्टेटर तो से टाइम रे भी लोकंकर फंडामेंटल राइट से छिनवार बहुत प्रयास करसे बट फंडामेंटल राइट इज सच ए थिंग्स इट प्रिवेंट द डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट टू फ्रॉम फंडामेंटल राइट तो जनकर मौलिक अधिकार के केही भी कोनोसी समय रे गोटे डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट भी नहीं पारे तो ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट रू इटा प्रिवेंट करसी क्लियर तो बुझी गेलो नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपोर्टेंट गाइस और अमेंडेबल तो बुझी गेलो फाइन सो all these are the what these are the various characteristics of which one fundamental rights fine and in our country live in the okay so far हमें काना बुझना फंडामेंटल राइट्स तार टिके स्वल्प गते किछि इतिहास तार फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और हमें नेक्स्ट बुझलो कि फंडामेंटल राइट्स इन फैक्ट केतेरा फंडामेंटल राइट्स अछि पार्ट 3 रे अछि 12 रु 35 ओके आर्टिकल 12 इटा डेफिनेशंस ऑफ स्टेट्स स्टेट कहले काना सेटा से कहसे क्लियर 13 इनकंसिस्टेंसी जदि किछि थिबा से बाबदर कर इनकंसिस्टेंसी आई विल टेल इटा कहले काना 14 रु 18 काना कहबा राइट टू इक्वालिटी फाइन राइट टू इक्वालिटी 19 रु 22 राइट टू फ्रीडम then 23 and 24 which one right to equality right to freedom against right to freedom against exploitations fine guys 23 24 next 25 to 28 right to freedom from religion okay 29 to 30 cultural and educational rights fine 31A already kotla right to property 32 right to constitutional remedies 33 to 35 किछि गुडे restrictions बा किछि गुडे relaxations to certain agencies all these are there so in this way the total number of fundamental right आगरु थिला 7टा जेंटा के right to property कटी करी एबे अच्छे 6टा fundamental rights okay clear and today we will discuss from the articles 12 to 18 आज हमें डिस्कस करमा इन डिटेल आर्टिकल केते 12 रु 18 फाइन नेक्स्ट while preparing note please pause टे करो और लिखि नियो फाइन नेक्स्ट आखु तो बड़ भाग समय ओके नेक्स्ट वन First, actually, Article 12 कहले काना. As I said, Article 12 कहले definitions of state कहिचे. Definitions of state. And here the state is defined in the wider form. आमे state कहले normally कहा के बुझता. 28 टा state जन अछि. But here the state रो meaning something else. ताठानु टिके अधिका comprehensive अछि. Yes, no doubt. Central government और parliament बा central legislature as well as central government like the state government and state legislature both legislative assembly legislative council this one the समझ जानिचो तार बाहरे भी state कहला local self government municipalities
Okay, municipal council, corporations, nagar panchayat, then gram panchayat, panchayat samiti, many more. Fine. And the other authorities also, and the other authorities. Other authorities कहले से कोनोसी जे कोनोसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ गवर्नमेंट संगे रिलेटेड थिबा, जहाँ गवर्नमेंट रो किछ फुली बा हाफली कहनी भी वे रे आइदर कंट्रोल्ड होतिबा बा पैसा पाउतिबा मिनिमम. फॉर एग्जांपल LIC, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. All these are the various ONGC. ई सबु जाको जदि गवर्नमेंट संगे रिलेटेड अच्छे तो से सबु के आर्टिकल 12 रे काना कहायसी स्टेट कहायसी. एंड आर्टिकल 12 it is applicable to both part 3 as well as part 4 of the constitutions. तामने फंडामेंटल राइट आउ DPSP रे जहां भी प्रोविजंस अच्छे से सबु के ई सब स्टेट सेठाने एप्लीकेबल हेबे. आर्टिकल 3 रे नेगेटिव टू द स्टेट अच्छे, आर्टिकल 4 रे पॉजिटिव टू द स्टेट अच्छे. आर्टिकल 3 रे काना कि राइट टू इक्वालिटी, तमे कहार इक्वालिटी भंग करि परिबो नाही कोनसी गवर्नमेंट, ना कैन स्टेट गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना पार्लियामेंट, ना विधानसभा, ना लोकल सेल गवर्नमेंट, ना कोनसी भी एजेंसी, ना LIC, ना ONGC केही भी कैन नॉट टेक अवे योर फंडामेंटल राइट. तो नेगेटिव टू ऑल दिस. पॉजिटिव माने काना गवर्नमेंट का करबा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के प्रमोट करो, गवर्नमेंट का करबा वुमेन मन को टिके सेपरेट बेनिफिट बा दबा, क्लियर ना, मिनिमम वेजेस दबा. तो पॉजिटिव गवर्नमेंट और स्टेट शुड प्रमोट दैट. गॉट इट नाउ. नेक्स्ट, so article 12 I think everyone have understood. It define what the meaning of comprehensive state. It is applicable to both which one, part 3 and part 4. Next one, article 13. This is very important, guys. Fundamental rights are protected through the article 13, 32, 226 and 359. Out 13 काना बुझमा. हमें जानी जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस केबे इंप्लीमेंट हला 26 जनवरी 1950. और 26 जनवरी 1950 सन 1950 ର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ଲ ଯଦି ବନିଥିଲା, ଯେତେ ବି ଲ, ओके, ऑन द लॉ, सेटा लॉ हो कहनी रेगुलेशंस हो, ओके, बा किछि बायलॉ हो, इनफैक्ट ऑर्डिनेंस हो, तार पूर्वरु भी किंता परे जहां भी, ओके, लॉ, रेगुलेशंस, बायलॉ, ऑर्डिनेंस, कस्टम हो, ओके, गॉट इट गाइस, ऑर्डर हो, एनी ऑर्डर, एनीथिंग्स 26 जनवरी पूर्वरु बा परे जहां भी किछि सबु जदि जिनिस, if they are not consistent, inconsistent, if they are inconsistent, जदि फंडामेंटल राइट सहित, जदि मौलिक अधिकार सहित कोनोसी भी लॉ 1950 मसिया पूर्वरु जदि कंसिस्टेंट नहीं हवा, जदि समान नहीं हवा, ताहले बा मौलिक अधिकार के भांगुचे, ताहले से मौलिक अधिकार बा से सबु लॉ, से सबु रेगुलेशंस, से सबु ऑर्डर आइदर पूर्वरु बा तार परे भी, क्लियर ना, तार परे भी यदि के बनावा से केस रे से सबु लॉ बा ई सबु जिनिस काना हवा null and void कहजिबा. काना कहजिबा null and void. इटा पॉलिटिकल लैंग्वेज बा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज. जदि हम नेचुरली बुझमा सेटा कैंसिल्ड करबा बा से सब काना ऑटोमेटिकली रिपील्ड हे जिबा, हटी जिबा. क्लियर. So any law which was made before the constitutions, and if that violates the fundamental rights, then that will be null and void, guys. So article 13 in this way it protects the fundamental right. धरिनियो
पार्लियामेंट रे जे बसचन से माने धरिनियो एंता किछि लॉ आनले जेनटा कि धरिनियो हमर रेस्ट्रिक्शंस ऊपर इंपोज करतेबे कैन बुलवार ऊपर इंपोज करते रेस्ट्रिक्शन ताले का हवा दैट विल वायोलेट फंडामेंटल राइट्स तो सेटा ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हे जिवो क्लियर ना तो इन दिस वे इट प्रिवेंट्स द स्टेट to form any law which will violate our fundamental rights clear तापर बेसी इंपोर्टेंट अछि 12 13 बुझि गेलम अब फर्स्ट है काना 14 to 18 it deals with the which one the right to equality okay first article this is very important guys Article 14 it deals with the equality before law. It दुईटा जिनिस अछि equality before law and equal protection of law. First that इतिहास के बुझमा equality before law এটা UK रो আসছে এটা USA रो fine इक्वालिटी बिफोर लॉ पहला करी एवीडीसी बोली गुटे जूरिस्ट से पहला करी रूल ऑफ लॉ बाबदरे कहिथिले तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एवीडीसी कांसेप्ट रो आछे इनफैक्ट एटा थोरे यूपीएससी रे क्वेश्चन पजरे थिला कि रूल ऑफ लॉ बा इक्वालिटी बिफोर लॉ फर्स्ट टाइम किए फॉर्मुलेट करथिले सेटा एवीडीसी फाइन गोटे बही रे तो हम बुझमा इक्वालिटी बिफोर लॉ कहले काना बा इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ कहले काना फाइन एटा कि मैं टिके अलगा अलग कर दूचे ताकि बुझी जिमा जिनिसटा इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ओके हमें जानि छ कि लॉ रो सामना रे एवरीवन इज व्हाट इक्वल fine and equality before law which means that everyone is equal before the law everyone you I okay irrespective of kahari na rank na power कोनो सी जिंस देखा नहीं जे समस्त को समान कहा जिबा clear तो it means that which shows the supremacy of the law which shows the what supremacy of law लॉ टा सबठानु सुप्रीम ता माने लॉ सामने रे केही नय सर एवरीवन इज इक्वल दिस इज वेरी गुड ओके माने ना रैंक ना पावर ना एनीथिंग इट रेस्ट्रिक्ट सो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ बट प्रैक्टिकली इट नहीं हे पर प्रैक्टिकली समहाउ व्हेन इट इज इन जनरल टर्म generally it he parwa generally applicable fine that is very important and our country रे भी अच्छे इंडिया रे पाखा पाखी 20% इंडिया रे पाखा पाखी 20% का करा है से ई जिनिसटा एप्लीकेबल अच्छे और रिमेनिंग टा 80% का इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ जेंटा कि यूएसए रो फाइन आइटा यूके रो ओके equal protections of law कहले काना let me tell you very clearly that is very important कि धरिना गोटे वुमेन और मेल और ट्रांसजेंडर समस्त इक्वली ट्रीट करा हवा कि नहीं हवार कथा गोटे ट्रेन रे जदी हम जाउ छ केते अंक टिकट काना आइदर हैंडीकैप्ड उनको लाइक सेपरेट काना जगह अच्छे सेपरेट पूरा जगह अच्छे ताकि सेना बसी परबे अलगा माने केही नहीं जाई पा so they need special treatment and they require also they deserve also fine na तो equal protections of law कहले आमे का करमा equal treatment कहा के कहमा equal peoples को करवा किंतु unequal treatment कहा के करवार कथा unequal लोग को करवा कथा माने क्लासिफाई करा हिचे classifications reasonable classifications can be done reasonable means in terms of age okay in terms of gender and many more guys so fine now so article 14 deals with the what
equality of law, equality before law, and equal protections of law. Fine, guys. Next article, what? Article 15. Article 15, what it deals with? The Article 15, it deals with the what? Everyone is prohibitions of discriminations. कहीं भी discriminate कहा के नहीं करन. Prohibitions of discriminations on the grounds of na caste, okay guys, sorry for little bit disturbance. Okay, so article 15, article 14, what it shows कि everyone is equal before the law and equal protections of law, and unequal treatment for unequal peoples or classification जेंटा है, different policies programs होचे. For example, president and governor तांको special privileges दिया है कि तांको कहीं भी कोर्ट रे भर्ती करा जाई नहीं पाए. But constitutions रे धरी नियो in case यदि समाने प्रेसिडेंट हटी गले बा गवर्नर हटी गले तार परे यदि समाने किछि भूल करथिबे, they can be put under the law. Got it na? That is the thing. Article 15 kana it prohibits discrimination. It prohibit discrimination. कौनसी भी लोक discriminations कहा के भी ना कास्ट बेसिस रे, ना रिलीजियन बेसिस रे, ना रेस बेसिस रे, ना सेक्स बेसिस रे, कहा के भी but nobody will discriminate on the grounds of all these. तार माने काना ना कहनी लोग भी कहा के केन जाति ना रे जना में स्कूल रे देखबो अलगा अलगा बसा है आगुरु होथिला एबे नहीं हेबार एबे भी यदि केने अछि ताला आर्टिकल 15 रे दे आर पनिशेबल. बा कास्ट छुआछूत कहा के कास्ट ना रे गाली दबटा, क्लियर ना? That is also prohibited. So all these things are कहनी भी discriminations ई सब ग्राउंड रे करी ही नहीं पा रहे कहीं भी नहीं. बट कही थिले मने पका इट इज नॉट एब्सोल्यूट. ता माने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस करा ही परबा. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस फॉर एग्जांपल एबे जेंता ଗୋଟେ उदाहरण टे देली ट्रेन रे स्पेशल अलगा बगी होचे कहा लगी हैंडीकैप लगी दे डिजर्व बाय नेचुरल बगी रे गले कन एक्सीडेंट होवर चांसेस होचे. फाइन. सो आर्टिकल 15 गॉट इट. आर्टिकल 16 का नाम इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट. केन केस रे? एम्प्लॉयमेंट केस रे. फाइन. तो रोजगार क्षेत्र रे समस्त को समान सुविधा दिया जीवा. कोनोसी भी ग्राउंड रे एम्प्लॉयमेंट कहा के जेंदा कि प्रॉपर नोटिफिकेशंस बाहरबा, टाइमलाइन दिया हवा. सो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लियर ना? बट that do not violate तामने स्पेशल प्रोविजंस करा ही परबा. ई केस रे भी कहा के चिल्ड्रन लगी, वुमेन लगी, ओके, देन एससी-बीसी लगी बा ओबीसी लगी बा डिसएडवांटेज हैंडीकैप्ड लगी. फाइन. बट आर्टिकल 16 और so all these that do not violates what special provisions. आउ से स्पेशल प्रोविजंस रे ही कान करा है छे रिजर्वेशंस दिया है छे. आ बहुत लोग रिजर्वेशंस को लोग नेगेटिव ऑप्शन ठीक है बुझिना मा एक्चुअली कान त बस सत्य कथा कान व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इज दैट. ओके, हमें जानी चा कि रिजर्वेशंस मात्र यदि जानी न सुनो रिजर्वेशंस मात्र 7% दिया है. केते रिजर्वेशंस only lies in the organized sector रे. organized sector केते 7% मात्र. तामने पब्लिक सेक्टर रे ओनली. तो पब्लिक सेक्टर इंडिया रे केते परसेंट? मात्र 7%. माने 93% रे नहीं ना मंदिर रे अच्छे ना मस्जिद रे अच्छे ना के क्लियर. तो ना प्राइवेट पार्टीज रे अच्छे कौन सी जगह नहीं. सो सेठा नहीं अच्छे. सेठा फिर किछि गुडा एससी एसटी ओबीसी हैंडीकैप्ड, ओके, वुमेन
ये सब मिसिक्री मैक्सिमम 49.5 और सेता फेर नहीं दे आर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जानछ इमाने सब प्रिवेंट काना 3000 वर्ष तक से माने डिस्क्रिमिनेट नहीं थिले माने जस्ट हमें बेसिकली हमें कथा हसा रिजर्वेशन बाबत रे बट कास्टिज्म बाबत रे मैं कथा हूं कास्टिज्म केते लोक लाइफ के बर्बाद केंदा करि छी एबे भी casteism is widely practiced in the many part of the country marriage रे एबे भी young generations भी okay part उडे केस रे part लोग पढ़ी थी भी but still they believe in this they are living in this clear ना so that is very important you will decide whether it is good or bad but both situation need to be know तो 14-15 बुझला next article 14 the clear rule of law 15 prohibit of discriminations 16 equal opportunities पे बुझला article 17 it abolish untouchability abolitions of what untouchability छुआछूत भेदभाव भाव कि इंडिया केन जगह के गला न इंडिया का ना एंटायर वर्ल्ड दे रीच टू द वर्ल्ड पीक मून के पहुंचले ना मार्स के पहुंचले ना बट एबे भी ओडिसा रो किछि गां रा जदि देखबो बिहार रो कि यूपी रे भी देखबो एबे भी छुआछूत भेदभाव अच्छे एंड इट प्रोहिबिट्स इट एबोलिश्ड इट क्लियर ना तो आर्टिकल 17 इट्स एबोलिश द फंडामेंट एबोलिश व्हाट अनटचेबिलिटी हम पढ़ी थिला 12 रे कि स्टेट ई सब करि नै पारे बट प्राइवेट इंडिविजुअल भी 15 ओके आर्टिकल्स 15 article 17 article school day article 23 24 प्राइवेट इंडिविजुअल नु भी ई सब जिनिस प्रोटेक्शंस लोकों को दिया हिसे एही का के एक्सप्लोर नहीं करि पारन 23 24 अनटचेबिलिटी भी नहीं पर 17 so this is the thing guys and got it now and the last one is the abolitions of titles last one is the what abolitions of titles okay abolitions of titles एके बुझमा आगरू राजा महाधिराज राजकुमारी कुंवरफल छत्रपति तापरे छत्रपति सार से ई सब टाइटल्स माने दिया जाउथिला बा आगरू किछि उडा टाइटल्स हेरेडिटरी टाइटल्स बहुत दिन रही आछे क्लियर ना तो से सब टाइटल्स के इठाने काना हटे दिया गला ओके दिस इज नॉट द फंडामेंटल राइट कि कहा के राजकुमारी कहि के डाको कि राजकुमार कहि के डाको कुंवरफल कहि के डाको क्लियर ना सार कहि के क्लियर ना सो हेरेडिटरी टाइटल्स के हटे दिया गला किंतु जेन भी टाइटल्स के अन करा जाई छे एकेडमिक धरिनियो एकेडमिक्स काना डॉक्टर ओके पीएचडी होल्डर प्रोफेशनल बा धरिनियो किछि गुडे जदी अवार्ड मिलु छे अवार्ड्स आर नॉट कॉल्ड एज टाइटल्स ओके तो अवार्ड्स डू नॉट वायोलेट आर्टिकल्स 18 किंतु अवार्ड्स के सरनेम आकर यूज नहीं करी हुए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं कहा हुई पारे भारत खाली सचिन तेंदुलकर कहे तो सो अवार्ड आर नॉट द टाइटल्स बट इट कैन नॉट आल्सो यूज्ड एज अ सरनेम क्लियर इनफैक्ट अवार्ड्स इंडियन नेशनल्स भी फॉरेन रो अवार्ड्स भी नहीं पारन और जदी नेबा के हेले प्रेसिडेंट रो परमिशंस नेबा के पड़वा क्लियर तो ओके सो आर्टिकल्स 14 to 18 समस्ते बुझिलो ना नहीं आर्टिकल्स 14 to 18 डील्स विथ द वर्ड सबु तक देखबो पहला काना रूल ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ 15 काना प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस एही सब डिस्क्रिमिनेशंस हटे दिया गल तो समस्त इक्वल 16 का इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया हला 17 एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी इक्वल
18 एवोल्यूशंस ऑफ टाइटल तो ई सब काम माने कार बारे डिस्कस करूचे इक्वालिटी तो ई आर्टिकल्स 14 टू 18 के कान कहा होचे राइट टू इक्वालिटी ओके गाइस बुझलो सब के टिके रिवाइज कर नबो लिखि नबो आउ थरे मने पकाबो समाज रे काना होची तार से कोरिलेट करबो देन यू विल आस्क जदि तथापि किछि क्वेश्चन डाउट आबा पचराबा निर्द्वंद्व ओके आओ नेक्स्ट क्लास हमें इटा के फिर कंटिन्यू करमा फाइन क्लियर सो हैव a great day have a great times and thank you very much guys